तो अभी जो हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड. सो द नेम इज इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा. पहले तो आपको ये समझना है. You should understand that this is actually transfer or gain of electrons, okay, between the combining atoms. So electrovalent bond is formed due to the gain or loss of electrons. तो वैसे हमने पढ़ा है कि जब गेन और लॉस होता है तो क्या फॉर्म होते हैं, आयंस बनते हैं. तो पहले इस केस में क्या होता है, पहले आयंस बनते हैं और उसके बाद उनके बीच में अट्रैक्शन होता है और बॉन्ड जो वो फोर्स है अट्रैक्शन का, इट इज नोन एज electrovalent bond, and because they are formed after the ions are formed, that is why it is known as ionic bonds. तो सबसे पहले देखेंगे हम कि कैटायन कैसे बनता है. ये आप सब आपको अच्छे से पता है, बट देन ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम. तो सोडियम का एग्जांपल लेंगे हम. एटॉमिक नंबर 11. सोडियम विल have the electronic configuration as 281. To attain the octet, it will donate this electron, किसी को donate कर देगा ये एक electron, and then it will acquire, because it has donated one electron, so it will form a cation with one positive charge. So this is how it is formed. आयंस बन गए. ठीक है, एक रिवीजन है बस आपका लास्ट टाइम का. क्लास 9 पे हमने आयंस के फॉर्मेशन देखे हैं. एंड देन कमिंग क्लोरीन. क्लोरीन में 17, configuration 2, 8, 7. That means to complete the octet, it needs one electron to be added to its electronic configuration, जिससे इसका configuration क्या हो जाएगा, 288. तो इसने क्या किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिया है, गेन करा है. तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर. तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन के आयंस बन गए. दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल आयन फॉर्मेशन का. मैग्नीशियम का देख लेते हैं. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12. कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2, 8, 2. दैट मीन्स to attain the octet, to come to this number, it has to get rid of this 2. These 2 electrons have to be donated to someone who needs it. When it will donate 2 electrons, it will get a positive charge, and that 2 positive charge. So दो तरीके से लिख सकते हैं आप, Mg2+ भी लिख सकते हैं, Mg++ भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये आयन बन गया. ओके, एक और एग्जाम्पल देखेंगे. एल्यूमिनियम का देखते हैं. एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3. अगेन to come to this stage, it has to get rid of this 3. It has to give this 3 to someone who needs it, and because it has donated 3 electrons, the charge will be Al3+, 3 positive charge. ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से आयंस आर फॉर्म्ड, हाउ आयंस आर फॉर्म्ड. तो उसमें जो डोनेट करते हैं, व्हाट आर मेटल्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, है ना. तो जिन्होंने डोनेट किया, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने इनको डोनेट करके 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 3 पॉजिटिव चार्ज अटेन किया. यानी जिन जिन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 एंड 3 हैं, वो मेटल्स हैं और वो क्या बनाएंगे, वो कैटायन बनाएंगे, बिकॉज दे विल लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड देन दे विल फॉर्म अ कैटआयन. तो याद रखेंगे, जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या बनाएंगे, दे विल मेक कैटायंस. कमिंग अप, जिनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, 6, 5, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ऑक्टेट बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसके ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर 2 नेगेटिव, इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, यानी ये क्या होंगे, ये नॉन मेटल्स होंगे. Okay, they will be non-metals. Why? Because they are gaining electrons, and when they gain electrons they become non-metals. तो जो भी आपका ये बॉन्ड बनेगा, हमारा आयनिक बॉन्ड, ये किसके बीच में बनेगा, ये उन कैटायंस के बीच में बनेगा जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन अनायंस के बीच में बनेगा जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो है आपका आयनिक बॉन्ड. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन देख लिया इन्होंने, अभी मैंने समझा दिया हाउ कैटायंस आर फॉर्म्ड, हाउ एनायंस फॉर्म. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आयन. इट इज अ चार्ज पार्टिकल which is formed due to the gain or loss of one or more electron. This is definition of ions. Okay, how ions are formed? By gain or loss of one or more electrons by the atom. अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिसने डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर गेन किया है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और नेगेटिव एलिमेंट बन गया है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एलिमेंट्स मेटल्स, और नॉन मेटल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. तो जो कैटायन बना है और जो एनायन बना है, दे आर ऑपोजिटली चार्ज्ड, एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. So what will happen? This cation and this anion will attract each other and they will form a bond, and that bond is known as electrovalent or ionic bond. It's a kind of electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions. Okay, now this is the definition. What is an electrovalent or ionic compounds? The compounds which are formed after electrovalent or ionic bond, the compounds which are formed as a result of transfer of electrons or formation of ions, then they are known as ionic compounds. ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको. समटाइम्स क्वेश्चन कम्स कि इसमें से इस वाले some set of compounds में से बताइए which are electrovalent and which are covalent compounds. Okay, so first thing which you need to understand is they should be both, the first half should be मेटल एंड द सेकेंड हाफ शुड बी नॉन मेटल, है ना. देखें NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, पोटेशियम एंड ब्रोमीन एंड कैल्शियम एंड क्लोरीन. समझ में आ रहा है ना. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स के. इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, वही सेम जो वैलेंसी है हमारी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम loses or gains to form an electrovalent bond is called electrovalency. Same thing. What is valency? Same as electrovalency. And the word electro is added because gain or loss electron का हो रहा है. Why cesium fluoride is the most ionic compound? ये आपको बताना है, और आपका रीजन इसका क्या रहेगा. तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और इसीलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है बहुत स्टेबल और आयनिक बॉन्ड होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको, रीजनिंग का क्वेश्चन है. तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई आर आयनिक कंपाउंड स्टेबल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, QR लिख लेंगे इसको भी, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आता है ये बोर्ड में. सो आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय आयंस. ओके, एंड देयर इज, ये आपका कीवर्ड आना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस. ऑल्दो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स भी है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, एंड इट ओवरकम्स द रिपल्सिव चार्ज, एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स आयनिक कंपाउंड स्टेबल. तो आपका कीवर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस. ओके, नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स.
अब आ जाते हैं structure of some electrovalent compound. This is very important. Okay, this is important because every year they will ask you to draw the structure of these compounds. Okay, any compound they can ask. So first of all, we will look at the structure of sodium chloride. Sodium. तो अब हम आ जाते हैं, जो हमारा मेन जो हमें समझना है वो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड. अब इसको समझने के लिए ओके, नाउ विल सी द स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड. ओके, first of all we have to draw the orbits. For that we should know that how many shells does that atom have. Talking about sodium, sodium symbol is Na, chlorine symbol is Cl, and then we have to write their electronic configuration. So sodium will be 2 8 1. For chlorine it will be 2 8 7. So we have written the configurations. Now we will draw the electrons in each orbit. So we have, in the first shell of sodium, we have 2 electrons. In the second shell we have 8 electrons. So 2 4 6 and 8. And the last orbit we have only 1 electron. Okay, now filling the chlorine electrons. First shell it has got 2 electrons. In the second it has got 8 1 2 4 6 and 8. In the last shell it has got 2 4 6 and 7. Now you see that there is a deficiency of 1 electron in chlorine atom, and sodium has 1 extra electron. This 1 electron is transferred from the sodium atom to the chlorine atom, thus resulting in the formation of sodium chloride molecules. So after combination, what will happen? You can see here, this is sodium. The configuration now becomes 2 8, and for chlorine the configuration becomes 2 8 8. Filling up the shells again. First it is only 2 electrons, and the second shell it has got 2 4 6 and 8. Here in chlorine, first 2, then 8, and then again 8. So this way, after the transfer of electron, this electron is actually from sodium. Okay. So after the transfer of electrons, we see that they have gained the charges. Okay. And what are the charges? Because sodium has donated 1 electron, it will have 1 positive charge. Chlorine has got 1 electron, so it has got 1 negative charge. Got it? So this way the formation of molecule happens. Now because they are oppositely charged, they get attracted towards each other, and this force of attraction is Coulomb's force. Okay, Coulomb's force, electrostatic force of attraction, and with this both the atoms will be joined together by this force. Okay, so this way you will be understanding orbital diagram, although orbital diagram is not in your syllabus, but electron dot diagrams come in your syllabus. Now we'll see how to draw the electron dot diagram.
Electron dot diagram, or also known as Lewis symbol, is actually it consists of only the symbols of the elements surrounded by dots. That is why the name electron dot. And only they are representing the outermost shell of the electron. For example, if I have to show the electron dot diagram of hydrogen, it will be H, and in hydrogen only one electron is present in the outermost shell. So this is the electron dot diagram of hydrogen. Suppose I want to show the electron dot diagram of oxygen. So it will be O, that is the symbol. And how many electrons in the outermost shell? It is 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Got it? This way you can show the electron dot symbol or electron dot diagram. Okay. Now we'll be taking the example of sodium chloride only to show the electron dot. Configuration is 281. That means in the outermost shell only one electron. It is combining with chlorine. Okay, it is combining with chlorine. Chlorine has the electronic configuration as 287. So in the last shell, how many electrons? 7. So we will show only 7 electrons because we are only considering the last shell. So 1 with dots, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay. So this way we have drawn. Now we will show the transfer of the electron. So we will show the transfer of the electron like this. This electron will come somewhere here. Okay. And thus what it will give? It will give Na plus Cl negative. Or you can just write NaCl. You can just write NaCl. So this is the way you will be drawing the electron dot diagram for sodium chloride. Very important. Okay. Now we will see another example which is given in your book, that is magnesium chloride. First we will see in the orbital diagram how it is forming, how magnesium chloride molecule is being formed by the diagram, the orbital structure. We'll see the formation. This magnesium, you have to first write its symbol and the configuration. It is 282. Then we have chlorine. Chlorine, you know the symbol. Then configuration is 287. Okay, same here. Chlorine 287. Now we'll draw the electrons. First shell 2, second 2, 4, 6 and 8, and in the last shell we have 2 electrons. Okay, in the chlorine, again the chlorine we have 2, then 8, then 7. Okay, same way for chlorine. Here we will fill the electrons. First shell 2, 6 and 7. Okay, now what will happen? Again, this one electron will go to this chlorine here, and this one electron will go to the other chlorine. Why we need other chlorine? Because chlorine can take only one electron. Okay, chlorine will take only one electron. One chlorine will take one electron. Magnesium is ready to donate how many electrons? 2 electrons. So that is why it needs 2 chlorine. So this is the way how magnesium transfers its 2 valence electron to 2 chlorine. And after combination, what will happen? This one electron is from magnesium. So this way, after combination, this will result in the formation of, it has donated 2 electrons, so 2 positive,
Okay, and then they have got one negative and one negative, and the force of attraction between these two, between these three, that is Coulomb force, will give you electrostatic force of attraction and formation of magnesium chloride. Okay, magnesium chloride will be formed, one magnesium combining with two chlorine. So this is the way how a molecule of magnesium chloride is formed. Now we will see how we will draw the electron dot structure of magnesium chloride. So first we will see magnesium, that is 2, 8, 2, chlorine, it will be 2, 8, 7. So how we will draw the orbital structure of magnesium? Magnesium in the outermost shell, it has got only 2 electrons. So we will draw 2 here. Then we will add, because it is combining with chlorine. So 1 chlorine here, 1 chlorine here. Both the chlorines have 7 electrons in the outermost shell. So you can see here 7. Again 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now this electron will come to this place and this electron will come to this place. Okay, and then you will write arrow and you will say that what it has formed. It has formed magnesium, that is 2 plus and plus, and it has formed chlorine. How many chlorines were needed? 2. तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्लोर, इस तरीके से Cl लिख देंगे और Cl के आप क्या बना देंगे, डॉट्स बना देंगे. ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका. तो you will just write H this thing and you will put a minus sign here, or you will simply write Mg2 plus 2 Cl negative. Okay, so this is the way how you will draw the electron dot structure of magnesium chloride. Now we'll see the other example in your book, that is calcium oxide. Calcium atomic number 20. Okay, atomic number 20. So how you will fill it is 2882. Oxygen atomic number 8. So 2 and 6. Look at the electron filling, we've already filled. So it has got 2 electrons in the outermost shell, which it needs to give to oxygen. Why oxygen? Because oxygen has 6 electrons in the outermost shell. So it has the capacity, it has the free space. 2 spaces are free here. So what will happen? This 1 electron will be transferred to this, and this 1 electron will be transferred to this place. Okay, now after combination what will happen? You can see, because it has donated this electron, so its configuration becomes 288. It has received 2 electrons, so its configuration becomes 28, and this electron is from calcium and this electron is also from calcium. Because it has donated 2 electrons, calcium has donated 2 electrons, so it has got 2 positive, this thing, it has converted into calcium ion, and this oxygen has gained 2 electrons, so it has got 2 negative ion, so it the formation of oxygen ion. They are oppositely charged, so they will attract each other with the, again, that same electrostatic force, and this electrostatic force, that is Coulomb force, is the basis for the formation of ionic bond. Because they have converted into ions, and these ions are attracted, so formation of ionic bond. Now we'll see the electron dot structure of calcium oxide. So we'll see the electron dot structure of calcium oxide. Again, calcium has how many electrons in the outermost shell? It has got 2 electrons in the outermost shell, plus it is combining with oxygen, which has got how many electrons in the outermost shell?
6 electrons. So 1, 2, 3, 4 and 5, 6. So what will happen? Again, we have to show that it is going from here to here, from here to here. So then it will give the resultant. The resultant will be calcium, which is acquired 2 positive charge, and plus oxygen, which you have to show 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and it has got 2 negative charge. Okay, or you can just write Ca2 plus O2 negative. So this is the electron dot diagram for calcium oxide. Okay, ये देख लिया हमने electron dot structure of calcium oxide. Now you all know that whenever the electrovalent bond or ionic bond is formed, there is transfer of electron. Okay, one entity will transfer the electron to the other. So you have to remember this, that electropositive atom undergoes oxidation. Oil, याद रखना है, oil. So what is oxidation? Oxidation is loss of electrons. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, यानी जो सोडियम है जब वो आयन बनाएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम यही कहलाएगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इट विल फॉर्म पॉजिटिव आयन. सो सोडियम विल अंडरगो oxidation. Sodium will undergo oxidation. Chlorine accepting the electron, so electronegative atom, and this will undergo reduction. This will undergo reduction. So you have to remember that oil and rig, that is reduction is gain of electrons. So oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron. Those who donate electron will undergo oxidation. Those who gain electron will undergo reduction. They both will go simultaneously, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा लेगा, तो दोनों ही चीज होगी, वहां पे ऑयल भी होगा, वहां रिग भी होगा. तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स प्रोसेस, in which both the things, that is oxidation and reduction, happens simultaneously. Okay, now we'll see the example of sodium chloride, how it is formed by the redox process. Sodium chloride is formed by the combination of sodium and chlorine. पहले हमने एक balanced equation लिख ली हमारे sodium और chlorine के formation की. So whenever we are writing the balanced chemical equation, we'll come to know about the two half reactions, that what has actually happened. So first, sodium has undergone oxidation by donating 2 electrons. 2 सोडियम, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो 2 सोडियम कितने करेंगे? 1 and 2. So इसीलिए यहाँ पे 2 electrons लिखा हुआ. So 2 electrons, 2 sodiums have donated 2 electron and 2 chlorines have accepted 2 electrons. 1 chlorine 1, another chlorine 1. So that means बैलेंस इक्वेशन में देखो ना, Cl2 है, यानी एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे. सो दिस हैज गॉट अंडरगॉन रिडक्शन. अब पूरा लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें देखेंगे सोडियम से सोडियम आयन बन गया और क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन गया. सो दिस इज व्हाट reduction is, that is chlorine से chlorine का formation, chlorine ion का formation. This is known as reduction because this is gain of electron. Sodium undergoes oxidation because sodium loses electron. Okay, so oxidation and reduction always occur simultaneously. एक साथ ही चलेंगे. कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है तो उसी को दे पाएगा जो लेने के लिए होगा. तो इसलिए जब एक ऑयल होगा एक पे तो दूसरे पे रेग होगा. अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट.
और जो खुद रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब पहले तो हमने बोला ऑयल रिग, दैट इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है, किसमें हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन में। तो ये क्या होगा, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और क्लोरीन जो है वो क्या कर रहा है, रिग कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है क्योंकि वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एक बार इसको फिर से समझ लेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, बट दिस इज जस्ट अ सिंपल रिवीजन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इन क्लास 8। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट the one which undergoes oxidation is a reducing agent। अब यहाँ पे देखेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल देखेंगे। एल्यूमिनियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये खुद जा रहा है, इसका खुद क्या हो रहा है, इसका खुद हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका खुद हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्यूमिनियम क्या होगा, एल्यूमिनियम यहाँ पे होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये कंपाउंड है, अब इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये तो कंपाउंड है। तो इसमें वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एडेड है, जब यहाँ पे जा रहा है देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। फिर से इसको एक बार समझाती हूँ मैं। This compound Fe2O3, in this compound oxygen is already added, but after reaction oxygen is removed from this compound, that is iron 3 oxide, and it becomes only iron. That means removal of oxygen. So removal of oxygen क्या होता है, reduction। ये रिडक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम से क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो एल्यूमिनियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड आयरन 3 ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू आयरन। तो ये तो हो गया हमारा कि क्या कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। एजेंट्स उल्टे होते हैं, क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है इसमें आयरन में, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, ये क्या हुआ है, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो कौन सा एजेंट होगा, उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज, एंड दिस इज व्हाट रिडॉक्स रिएक्शन इज। और ये जो भी एग्जाम्पल ऊपर दिया है इसी से ही आपको एक चीज निकालनी है, समझनी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिड्यूसिंग एजेंट होगा डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो लॉस ऑफ, जिसमें लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, जहां पे लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का वहां पे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और जो गेन करेगा, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, या डोनर होगा इलेक्ट्रॉन का, डोनेट करेगा। तो लॉस को और गेन को डोनेट और एक्सेप्ट से भी आप समझ लेंगे। Now we'll be studying about the second type of bond, that is covalent bond. Now first we'll see what is the definition. The chemical bond that is formed between two combining atoms by mutual sharing. Now this mutual sharing is the key word of your answer. In your answer you should accommodate these two words, that is mutual sharing of one or more pairs of electron. Okay, 1 2 3 pairs of electron is called a covalent or a molecular bond.
The name of the bond is covalent or a molecular bond. And the compound which is formed due to this bond is called as covalent compound. Now to understand covalent bond, now what is happening? Suppose you are some A person, and you have a friend, very close friend, a B person, okay? Now this A person and B person both have brought very good tiffin. So in the lunch time, in the break time, lunch uh, interval time, what they will do, they will share their tiffins. And how will they do this? They will keep that tiffin between themselves, both the tiffins of A also and of B also, and they will share this tiffin. Okay, so B has the right to take some portion of from A also and from B also. Similarly, A has the right to take some portion from A and some portion from B. Now here what has happened? Both A and B have contributed one tiffin each, right? A has also given one tiffin and B has also given one tiffin. Similarly, now this was just an example to tell you about the this thing so that you can understand. Similarly, if we take A element and B element, now both will contribute the electron. This red dot is electron contributed from A and this purple dot is contributed from B. Now both the elements will have excess of this pair of electron. Okay, this is pair of electron. Both A and B will have the right on this pair of electron. This pair of electron will be counted in the valence electron number of B also and of A also. Okay. We'll further understand this with the example when I will give you the examples of some compounds formed by covalent bonding. But before that, we'll go through the theory which is given in the book. The theory says that the atoms of non-metals, okay, as I told you, metals and non-metals will form ionic bond. Why? Because metals will donate electron and non-metal will accept electron. But what will happen if both are non-metals? That means both the entities, suppose I take the example of chlorine, both chlorine and chlorine. Now what is happening? Chlorine is a non-metal. Now it wants to form a bond between chlorine and chlorine. They both will not lose electron because both have the tendency to gain electron. But when they are coming together, what will happen? As they both will not donate electron, they will share the electron. One chlorine has the electronic configuration as, you all know, 17, that is 2, 8, 7. Okay. So chlorine needs one electron each. That means this chlorine will also need one electron. This chlorine will also need one electron. So in this case, what will happen? When we will draw this diagram, we will generally draw the outermost shell, okay, the outermost shell diagram, and we will see. So in the outermost shell of chlorine, how many valence shell, how many electrons are there? There are 7 electrons, okay. There are 7 electrons. So I'll draw 7 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 here. And this one will also have 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now what will happen? This pair of electron will be shared by both. This pair of electron will be shared by both. So we will keep it like this. I will draw one electron here of this chlorine and one electron here of this chlorine, and this pair, this shared pair of electron will be counted with this chlorine also. That means now we'll count 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 and 8. That means octet of this chlorine is complete. Now I will count for this chlorine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So this chlorine also has the 8 electron, that is octet state, and this shared pair of electron will be in between these two chlorine atoms and will be shared by both. So what is, to summarize, covalent bond is formed between the atoms of non-metals. Okay, the atoms of non-metals, वो non-metals जिनमें 5, 6 और 7 electrons outermost shell में होते हैं. Okay, except carbon, which has 4. Carbon also forms covalent bonding, and hydrogen also does covalent bonding because it is a non-metal. So except carbon and hydrogen, others will have 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell and they will form covalent bond. Such element, the atoms of such elements मतलब जिनके 5, 6, 7 हैं और carbon और hydrogen, do not favor the loss of electron due to energy consideration. Now this word energy consideration you have to learn. ये बहुत important word है जो आपके आंसर में आना चाहिए. Why they do not lose electrons? Because they cannot lose electrons. Suppose they have 5 electrons in their outermost shell. Can they lose all the 5 and get their octet state? Can chlorine lose all the 7 electrons which it has in the outermost shell, so that its electronic configuration becomes, it loses the 7 electron? So what will happen? It will have the octet state, that is 2 and 8, but it cannot give away all the 7 electrons because of energy considerations. Okay, it will be easy for it to rather accept, okay, it will accept 1 electron rather than donating or giving up all these 7 electrons. So the word is energy consideration. So this will not donate electrons due to energy consideration, and such electrons, such atoms can complete their octet only by mutually sharing 1 or more pair of electrons. Each atom contributes equal number of electrons. That means both have to bring the tiffin, है ना? दोनों के पास एक टिफिन होना चाहिए शेयरिंग के लिए. ऐसा नहीं कि एक घर से खाना नहीं लाया है, तो अगर घर से खाना नहीं लाया है तो फिर कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा ना. तो फिर क्या होगा? अभी क्या हो रहा है, एक टिफिन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, मींस 1 इलेक्ट्रॉन और मे बी 2 इलेक्ट्रॉन, मे बी 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैज कंट्रीब्यूटेड. सो व्हेनेवर अ नॉन मेटल कंबाइंस विद अनदर नॉन मेटल, जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आपका कोवलेंट बॉन्ड. सो म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की whenever a non-metal and a non-metal will combine with each other. Now we'll see the examples. First example which is coming is hydrogen and chlorine combining together. You know hydrogen is also a non-metal, chlorine is also a non-metal. So hydrogen and chlorine, how they will form the covalent bond, we'll see. So now we'll see the example of hydrogen chloride. 3, 4, 5, 6. If you don't have colored this thing, you can just draw a cross or something. For hydrogen I have drawn this cross. So this means this is the shared pair of electron which is being shared by both, for hydrogen also and for chlorine. This is the correct way of writing. This is before combination, okay, and this is after combination. This is after combination. So you will write like this: before combination and after combination, and you will draw the diagram. Another example we will see of chlorine. Now chlorine and chlorine, because they are same, so I'm not using the different pen. I'll be just using the same pen. So this shared pair of electron will be between both the chlorines, and it will be shared by both the atoms of chlorine, and it will form Cl2. Okay. So these were the two examples between two different atoms and between two same atoms, but both are
nonmetals. Now, types of covalent bonds. The examples which I have given you, in this only one electron is being contributed by each element. Suppose two electrons it contributes, then what will happen? Suppose this is A and this is B. Now A is also giving 2 electrons and B is also giving 2 electrons. So what will happen? It will be shared by both like this. But how many pair of electron? It is 2 pair of electron. This is 2 pair of electrons. Suppose A is contributing 3 electrons, 1, 2 and 3. We'll see the examples later on, then you will understand. This is just a brief this thing so that you can. And here it has B has also given 3 electrons, so it will be shared by both. That means A will also have the right to the 6 electron and B will also have right to the 6 electron. But how many pair of electron? 1, 2 and 3. So 3 pairs of electron. So when it is single pair of electron, then it is single covalent bond. When it is 2 pair of electrons, it is a double covalent bond. When it is a 3 pair of electrons, it is triple covalent bond. We'll see the examples. First is a single covalent bond. I've already given you the example of chlorine, and these two examples we already discussed, hydrogen chloride and chlorine. With hydrogen also you can see hydrogen last only 1 electron in the outermost shell or the one shell and 1 electron of this hydrogen, so it will form a pair of electron will be shared between hydrogen and hydrogen. Then water is also a covalent compound. In this, oxygen, which has in the outermost shell has 6 electrons. Hydrogen has 1 electron. Hydrogen has 1 electron. Okay, so that means octet of oxygen is complete and this is hydrogen is complete. See this. Okay, so this way one electron is contributed from each hydrogen and oxygen has got 2. So that means the bond is single covalent bond. Now why? We have 2 pairs, sharing of 2 pairs. You will say, ma'am, we have shared 2 pairs are shared here. See, 1 and 2. But it is not between the same atoms. Okay, two pair of electron between the same atom, then it will be double bond. Here what is happening? This is one hydrogen and this is another hydrogen. So this is single covalent bond only. So how we will draw a single covalent bond like this? One single line is covalent bond. H and H, single covalent bond. Cl and Cl, single covalent bond. H and Cl, single covalent bond. That means a dash, a short line denotes a single covalent bond. Another examples which are given here is ammonia. We'll see its structure, methane structure, then carbon tetrachloride structure we'll be seeing, it's coming after this page. Now, what is double bond? I've already told you double bond when 2 pair of electrons are shared between 2 atoms. We'll see the example, oxygen. Okay, oxygen. See, this oxygen has how many electrons in the outermost shell? 6. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Again, this oxygen also has how many electrons? And this oxygen also has how many electrons? 6. So 1, 2 here. Then 3, 4, 5, 6. Now this pair will be shared between 2. So how many? Now it will have, you count it. This one is 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For this also now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this way oxygen molecule is formed, oxygen molecule, and these are
double bond, because between two atoms, two pair of electrons, okay, two pairs of electron are shared, so it forms a double bond. So this way we'll show double bond, and then for triple bond, I'm going to tell you when we'll study nitrogen further. So what are the examples of single covalent bond? So examples are hydrogen chlorine, hydrogen chloride, water, ammonia, methane, carbon tetrachloride are some examples of single covalent bonds, and how they are shown by single lines. See, hydrogen, hydrogen, then chlorine, chlorine, hydrogen chloride, water, ammonia, then methane, then carbon tetrachloride. So all these have single covalent bond. Double covalent bond, I have already told you, oxygen has double covalent bond, that is shown like this with two lines, two short lines. Now carbon dioxide also contains two double bonds. You can see here carbon between carbon and oxygen, two pairs of electrons are shared. Here also two pairs of electrons are shared. So C double bond O and double bond O, okay, because carbon has four valency, that means four spaces are empty for carbon. So two places here they are satisfied, two places here they are satisfied. Oxygen has two places, so two electrons, so two electrons it needs more to complete its octet. So this is 2 and 2 here, and thus it satisfies its valency. Let's see the diagram. Carbon has 4 valence electrons, which I have drawn as cross. Oxygen has 6 valence electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This oxygen also has same, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and now this double bond will be formed between carbon and oxygen, and thus you can count now for this. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For this also you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And here carbon also, all the 8 are satisfied. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay. So this way carbon dioxide contains 2 double bonds. And it will be shown by double lines. Now coming up to the triple bond. Nitrogen. Nitrogen has 5 electrons in its outermost shell. So 1, 2, 3, 4, 5. It needs 3 more. So 1, 2, 3, 4, 5. This way 1, 2 and 3. So triple bond is formed. 3 pairs of electron are shared between 2 nitrogen. Now looking at the octet here, see, well, let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 for this, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 for this. So it is shown by 3 lines. N triple bond N. So nitrogen molecule is formed which has triple bond. Now some molecules contain both the double bond and single bond. Let's see the example. I have told you that carbon has 4 places empty. So 2 carbons are attached with a double bond. That means 2 pairs are shared here. Now how many places left? For this carbon 2 places are left.
For this carbon also 2 places are left. In these places one hydrogen will come, so that one pair of electron is shared with hydrogen also, and this way this is the combination of the formula is C2H4, and so this molecule contains single bond also. 4 single bonds are there, 1 2 3 4, and one double bond is there. So ethene contains both the bonds. Similarly, we'll see another compound which is ethyne. If 2 carbon atoms are sharing 3 pairs of electrons here, so triple bond, and how many places are left now for each carbon? Only one place is left, so on that places hydrogen will come, and thus the formula becomes C2H2, and this is known as ethyne. So why eth and why yne we'll study in organic chemistry. This is covalency. What is covalency? It is exactly same as valency actually, but only for covalent this thing we use covalency term. The covalency of an atom is the number of its electron taking part in the formation of shared pair. Okay, कितने इलेक्ट्रॉन उसने खुद कंट्रीब्यूट किए हैं वो उसकी कोवेलेंसी है. तो कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द formation of shared pair. So covalency of hydrogen will be 1, oxygen will be 2, nitrogen 3, and carbon 4, similar as valency. Now coming up to types of covalent compounds, there are 2 types, non-polar and polar. First we will study about non-polar covalent compounds. Let's see the definition. Covalent compounds are non-polar when shared pair of electron are equally distributed between the 2 atoms. तो पहले तो यही लाइन समझेंगे कि इसको क्या होता है ये when shared pair of electron equally distributed between 2 atoms. Suppose this is A atom and this is B atom, and the shared pair of electron is exactly in between A and B. Okay, that means this distance, the distance between shared pair and B and the distance between shared pair and A is equal. ये दोनों equal होने चाहिए, equal होगा तो इसका मतलब बिल्कुल equally distributed है, middle में है एकदम से, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे जो compounds होते हैं उनको हम बोलते हैं non-polar covalent compound. तो जब ऐसा होगा तो there will be no charge separation and the molecule is symmetrical and electrically neutral. So charge separation नहीं होगा, symmetrical होगा और electrically neutral होगा. अब इसको हम एक बार polar वाले का example लेके देखते हैं. Polar वाले में क्या होगा, there are 2 atoms but the shared pair of electron is more towards any one, किसी एक के पास होगा. ठीक है, शेयर तो दोनों कर रहे होंगे लेकिन जो डिस्टेंस होगा एक एटम का शेयर्ड पेयर से और दूसरे एटम का शेयर्ड पेयर से वो डिफरेंट होगा, एक का कम होगा एक का ज़्यादा होगा. तो जब इस तरीके का शेयरिंग हो जाती है, इस तरह से जो शेयर्ड पेयर है वो किसी एक की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, देन इट इज़ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. और जब भी ऐसा होगा, whenever this will happen, there will be some things which will be happening. First of all, there will be a charge separation. There will be a charge separation. The atom which has the electron cloud near it, electron अगर उसके पास आ जाते हैं, they are more close to any particular atom, then that atom acquires a slightly negative charge because electron is more towards it. And the other one, जिससे इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है, it acquires slightly positive charge. तो सबसे पहले चार्ज सेपरेशन हो जाएगा. दूसरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको उस तरफ उसने अट्रैक्ट कर लिया है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो अपनी तरफ उसको खींचेंगी और जो स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का वो एसिमेट्रिकल हो जाएगा. वो हम आगे वाटर मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल में देखेंगे. एंड न्यूट्रल नहीं रहेगा,
क्योंकि इस पर थोड़ा थोड़ा चार्ज आ जाएगा तो पोलर बन जाएगा, पोलैरिटी आ जाएगी। एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर दोनों चीज आ जाएगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, तो चार्ज सेपरेशन भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पोलर एंड नॉन पोलर। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दीज। सपोज टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स आर आइडेंटिकल, दोनों सेम हैं, तो क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर है इट विल बी अट्रैक्टेड इक्वली। इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन, क्लोरीन के बीच में जो शेयर्ड पेयर है वो बिल्कुल मिडल में रहेगा। उसका रीजन ये है कि ये क्लोरीन भी उसको उतने ही ताकत से खींच रहा है जितना ये क्लोरीन। तो क्या होता है टग ऑफ वॉर में, व्हेन बोथ द टीम्स आर इक्वल देन nobody wins, the rope remains there only, the center point of rope does not move towards any team. So same thing is happening, shared pair of electron is attracted by the same power by both the nucleus, and so it remains exactly in between or at equal distance from the combining atoms, and thus it becomes non-polar. These are non-polar covalent compounds. So example is hydrogen, hydrogen. Example is oxygen, oxygen. Okay, so this way it will be, when same atoms are combining, then it will always be a non-polar covalent compound. So the covalent compounds are said to be polar when the shared pair of electrons are not at equal distance. As I told you, there will be a fractional positive and negative charges on them, and what these charges will do, they will give polarity to the molecule, and plus these type of compound will ionize in water. That means as soon as you add this compound in water, it will create positive and negative poles. For example, hydrogen chloride. So covalent bond is formed when both the combining atoms have 4 or more electrons in their outermost shell. That means they are non-metals. Then only covalent bond will be formed. So exceptions are hydrogen, beryllium and boron. They don't have 4 or more electrons in the outermost shell. Hydrogen, you know, it has only 1 electron in the outermost shell. Then beryllium has 2 electron in the outermost shell, and then we have boron has 3 electron in the outermost shell, and they are the exception to this saying that generally covalent bond are formed with that means they can only accept electrons rather than donating. Okay, hydrogen can combine with all non-metals with the help of covalent bond. So hydrogen is a non-metal, so it can combine with other non-metals with the help of covalent bond. Now let's see some structures. First of all is hydrogen molecule. As you all know, hydrogen means hydrogen and hydrogen together, so both the same atom, so it will be non-polar. I told you, when the bond is between the same atom, it is non-polar covalent compound. So how you will write or how you will make this? First you will write before combination, then you will write hydrogen, and then you will draw the electrons. See, both the hydrogen have single electron, and thus before combination they will come close to each other, and this way these 2 electrons will be kept in between. Then look at the electron dot structure. Each hydrogen with 1 electron in the outermost shell is shown by the dot, and after combination this shared pair of electron, that means this electron pair is kept in between, and both of them will have access to it, as I have shown you some diagrams earlier also in this chapter. And this way you will be writing H, and this is the way how to show that it is shared pair of, one shared pair of electron is there in between, and single covalent bond is there, and this is known as, this is how H2 molecule is made. Next example is chlorine. Again same with 2 chlorine, so it is non-polar compound. Look at the electronic configuration of chlorine, it is 287. That means अपने nearest noble gas argon के जैसा बनने के लिए उसको 1 more electron is needed, 1 electron it needs, so it will combine with 1 more chlorine to form a covalent compound. Again how to draw it? Before combination you will draw chlorine के outermost shell में कितने electrons हैं? 7. So you will draw 7 dots for each chlorine, and then 1 pair you will keep in between like this, and then
This chlorine also has access to this pair, and this chlorine also has access to this pair, and this way you will be making chlorine diagram. Now comes next example, that is oxygen. Oxygen again non-polar because two oxygen combine to form oxygen molecule. So again configuration, nearest noble gas बनने के लिए उसको 2 electrons less हैं, तो it will take 2 electrons, but now it will combine with oxygen to share 2 pair of electrons. See, outermost shell में से कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो आप 6 ड्रॉ करिए 1 2 3 4 5 6, इधर भी ड्रॉ करिए 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद आप बीच में उसको शेयरिंग दिखा दीजिए इस तरह से. तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया ऐसे करके, ये रहा 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये हो गया उसको एक और तरीका शो करने का, डबल कोवलेंट बॉन्ड को शो करने के लिए 2 लाइन्स एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. और ये इस तरह से इसको हम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कॉम्बिनेशन दिखा देंगे और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा. नाउ लुक एट द ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. अगेन कॉन्फिगरेशन 2 5, नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन के जैसा बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है इसके पास, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एक और नाइट्रोजन जो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा. सो लुक हियर, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5, सो यू ड्रॉ 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस, 5 फॉर दिस, और 3 जो है 3 के साथ इसको शेयर करा देंगे आप, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे. एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ओनली शोज यू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसी को ही इस तरह से दिखाएंगे. एंड लुक आफ्टर combination, you will show that it has shared 3 pairs of electron. Like this you will draw electron dot diagram. This is also the way to write, and this is the formula of the molecule. Now we will see one polar compound, that is hydrogen chloride. कौन होते हैं polar compound? जिसमें एक ज़्यादा electronegative होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्यार होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है. ओके, तो अभी पहले दोनों का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. हाइड्रोजन only 1 electron in the outermost shell, chlorine has got 7 electron in the outermost shell, so it will need 1 more electron to complete its octet. Okay, so what will happen, you can see here, before combination you draw the structure of hydrogen here, then you draw the structure of chlorine here. This is orbital diagram, last shell वाला यहाँ पे शो किया हमने, लास्ट शेल. यहाँ पे एक को डॉट से शो कर सकते हैं, एक को क्रॉस से शो कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हम इस तरह से इसको रखेंगे. ये क्रॉस जो है हाइड्रोजन ने दिया है, ये डॉट क्लोरीन ने दिया है, और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया विच इज शेयर्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. ओके, सो दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर टूवर्ड्स क्लोरीन, एंड दस क्लोरीन हैज़ अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैज़ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. तो थोड़ा पोलैरिटी आ जाएगी इसमें. ना वाटर मॉलिक्यूल अगेन पोलर, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो इस तरीके से स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव ये देखेंगे. ऑक्सीजन एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, सो वी विल ड्रॉ 1 2 3 4 5 एंड 6. हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, विल ड्रॉ इट विथ x, एंड देन ये देखिए ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो रहा है और ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ अटैच हो रहा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया. ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये आफ्टर कॉम्बिनेशन. सो 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर, one this and one this, so 2 single covalent bond. Then comes ammonia molecule, again it is a polar compound. And why it is polar? Because क्योंकि इसमें polarity हो जाती है. You can see here, to attain the electronic configuration of nearest noble gas, nitrogen is in need of 3 electrons. So hydrogen will give 1 hydrogen will give 1 electron, so 3 hydrogen will give 3 electrons. So see, after this is formation of ammonia molecule, so nitrogen is combining with 3 hydrogen atoms with single covalent bond. Okay, this is one single covalent bond, this is another single covalent bond, and this is another single covalent bond. You can see the electron dot structure here. इलेक्ट्रॉन के नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आप बना दीजिए, 1 2 3 4 5 डॉट्स, एंड प्लस करके एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ अटैच कर दीजिए. एंड देन आफ्टर कॉम्बिनेशन you can see like this, 3 single covalent bond.
ये जो 2 डॉट्स बचे हैं ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने कंबाइन नहीं किया है। इन ऐसे पेयर को हम कहते हैं लोन पेयर। ये सारे शेयर्ड पेयर हैं, दिस इज नोन एज शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर, एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज नॉट शेयर्ड इज नोन एज लोन पेयर। नेक्स्ट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड मॉलिक्यूल। ये भी नॉन पोलर कंपाउंड है क्योंकि एक कार्बन को 4 क्लोरीन चारों तरफ से उसको बॉन्ड बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो नॉन पोलर हो जा रहा है। जस्ट look at the diagram here. One carbon having 4 electrons in the outermost shell, each chlorine combines to give 1 electron each, thus completing the octet of carbon, and sharing 1 electron from carbon, chlorine is getting its octet. So this is the electron dot structure and this is the structure of carbon tetrachloride. So you can see here this is 4 single covalent bond and this is the formula CCl4, 1 carbon and 4 chlorine. Then methane also, formula is CH4. So you can see here 1 carbon, 4 hydrogen, CH4. Again it is non-polar compound, similar as CCl4, CH4. इसका formula है CH4, methane. Okay, now you have to note that covalent compounds are made up of molecules which with weak force of attraction. तो ये ionic compound से weak होते हैं, तो either they are gases or liquids or soft solids. ये question आता है कि why covalent compounds are either gases, liquid or soft solid, because they are attached with weak force of attraction between the combining atoms. These compounds are volatile. Volatile का मतलब आपको पता है कि gases में change होते हैं liquid से with low boiling and low melting point, और जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं. दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, मोल्टन और एक्वस स्टेट. किसी भी कंडीशन में ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इनके पास आयंस नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में ही होते हैं. लेकिन जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट आयोनाइज, लेकिन जो पोलर हैं वो आयनाइज कर जाते हैं. सम ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड आर पोलर इन नेचर, सो दे फॉर्म आयंस एंड सो आयनाइज इन द सॉल्यूशन एंड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट इज द लिक्विड विच इज फिल्ड इन or used in electrolysis to enhance conductivity of electricity. These compounds are insoluble in water but dissolve in organic solvent. ओके, पानी में नहीं डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं हमारे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, लाइक अल्कोहल, ओके, सो दे डिज़ोल्व इन दैट बट दे डोंट डिज़ोल्व इन वाटर.